Yes, students, I welcome you once again back to the world of statistics. Before I start with my today's topic, students, see that you go through all the examples and sums that are in your textbook. People. Now, next, I move on to two-dimensional diagrams. Now, one-dimensional diagram is used to represent a single characteristic of the data. In such diagrams, either height or breadth is taken into consideration. Yes, over here, height or breadth is taken into consideration. But when the volume is large, when the volume is very huge, then in order to present it on a diagram, both length and breadth are taken into consideration. It means now over here, both the things will be taken into consideration, that is length as well as the breadth. Thus, total value is shown as an area in the diagram for which the diagrams like square, rectangle, circle or pie, that is sectorial diagram, are included. But we shall study circle and sectorial or pie diagrams. We have in our syllabus circle and sectorial or pie diagrams. Now, students, first I move on with the circle diagram. Yes, a little bit of theory part. When the volume of the data regarding two or more places, things or time is large. Yes, अभी हमने theory में देखा two-dimensional की theory में कि when the data is very large, very huge, then in such circumstances, when the volume of data regarding two or more places, things is large, then circular diagrams are used to present the data. The volume of the data is presented by the area of a circle. क्योंकि हम circle diagram की बात कर रहे हैं, so obvious है. The volume of the data is represented by area of a circle. The total volume of a data, yes, you all know, equals to area of a circle equals to pi r square. Pi r square, you all know, is 3.14 or 22 by 7. R, we all know, is radius. Now, area of a circle is proportional to the square of its radius. Therefore, in circle diagrams, square roots of volumes of different data are taken as radii of the circle. The radii thus obtained are arranged in ascending or descending order. Over here again, the arrangement of order is important, as we did in bar diagram, and are drawn with centers on same line at equal distance from each other. If the data are given with respect to time, then circles are drawn in order of time only. Yes, ये भी चीज़ मैंने आपको बार डायग्राम में सिखाई थी. If it is given as per time, then it will be drawn as it is. If the radius of the circle is too large, then it is divided by a constant, and if it is too small, then it is multiplied by a constant. Then a circle is drawn. Now, students, yes, this also I'll explain you with the help of example. Now, over here, डायरेक्टली आप लोगों को जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो ईयर के हिसाब से आप लोगों को एग्जाम्पल दिया हुआ है स्टूडेंट्स. सो ओवर हियर वी नीड नॉट अरेंज इट. अगर ईयर के हिसाब से नहीं दिया हुआ होता तो हम उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते. सो द डेटा ऑन प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट ड्यूरिंग 3 years is given to us. We are supposed to present the data using circle diagram. The data is in front of us. Yes, it is very huge one. So, as the given data are numerically large, radius is taken as a square root, जो हमने अभी theory में पढ़ा, of each value which is further divided by 250. Now, years are first column, second column of production, same as question. Next will be square root. Yes, calculating square root is the very first step. Square root निकालना ही है. 3,60,000, the square root is 600. 4,90,000, the square root is 700. 6,40,000, the square root is 800. Now I move on to the radius. Now radius equals to square root divided by 250, because again plotting 600, 700 and 800 won't be possible. So over here, each and every square root will be divided by a constant number, same as we saw in theory. It will be divided by 250. अगर
कोई सम में कैलकुलेशन करने पे 250 से या कोई भी फिगर से जिससे भी आप डिवाइड करते हैं बहुत छोटा आ जाता है तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मगर मल्टीप्लाई भी सेम नंबर से करना होगा। एज यहाँ पे डिवाइड हमने तीनों को 250 से किया है, उसी तरह से अगर मल्टीप्लिकेशन करना हो तो भी तीनों को सेम नंबर से करना ज़रूरी है। नाउ दिस इज आवर रेडियस। यस, हम उसके हिसाब से एक एक सर्कल बनाएंगे। नाउ यू ऑल नो हाउ टू मेक अ सर्कल स्टूडेंट्स। 2.4 स्केल पे देख के आप सर्कल उसका प्रॉपरली बनाएंगे। नाउ व्हाट ऑल थिंग्स यू विल राइट इज 3,60,000 यूनिट्स जो पहले वाले का है फर्स्ट ईयर, दैट इज 2013। रेडियस जो आप लोगों ने लिया उसका 2.4 आप लिखेंगे, उसके बाद 2.4 सेंटीमीटर्स। यस, एंड देन द लास्ट वंस नीचे सर्कल के बाहर आप लिखेंगे 2030। नाउ स्टूडेंट्स, कभी कभी सर्कल भी हमारा अगर बहुत छोटा होता है उसमें हम नहीं लिख सकें तो आप एरो करके भी बाहर उसमें दिखा सकते हैं। सेम फॉर द ईयर 2014 एंड 2015 students. Now next I move on to pie diagram. Now if the data related to different places, things or time consist of several mutually related subdata on different components are numerically large, then instead of divided bar diagram, pie diagram is used. The total volume of data is represented by a circle of suitable radius, and this circle is divided into sectors to present the sub data. In the diagram, total volume of the data is taken as 360 degrees and the volumes of sub data are expressed in terms of measures of angle and are presented on a circle with respective circular sectors. जिसे हम लोगों ने percentage divided bar diagram में division किया था. In the same way over here also students, we will divide each and every particular and then we will do the further calculations again. Yes, students, I'll start with the example of pie diagram. Now the question is, in a ledger of a company, the liabilities in the final balance sheet are as under. Present the data by pie diagram. Now, particulars and liabilities are given to us. Share capital 12 lakhs, deposits 8 lakhs, loan is 4 lakhs, whereas current liabilities is 4 lakh 80,000. Total is 28 lakhs 80,000. Now, I move on to the answer part, which is measure of angle in degrees for liabilities of different particulars can be calculated as under. Yes, as it is pie diagram, we need to calculate the data into degrees. Now, over here, again, we'll write the question. First two columns are of question itself. Yes, total is compulsory over here. Now I move on to the angles. Now students, very first one is share capital 12 lakhs. 12 lakhs I'll divide by 28 lakhs 80,000. That is my total. Then I'll multiply it by 360. I'll get 150 degrees. Next is deposits 8 lakhs. 8 lakhs I'll divide same by the total. That is 28 lakhs 80,000. Whatever the answer comes, I'll multiply by 360. And finally, in degrees answer I'll get is 100. So on students, you will calculate by yourself for rest of the two. Now over here also the total should be 360 because we have divided the data into 360 degrees. If the total is not coming 360 degrees, it means that there is some mistake. Now students, let us move on to the main part. Very first thing, yes, to write the heading that pie diagram showing different liabilities of a company during a financial year. Over here in short I have written all the degrees so that it is helpful to us in the main making part. Now our very first step is to make the circle. Circle ना इतना बड़ा होना चाहिए ना इतना छोटा होना चाहिए. It should be of appropriate size. Now our very first degree is 150 degrees. That is of share capital. So now students, my very first step after making the circle is to match the center with the
सेंटर, यस आई विल मैच द सेंटर. जहाँ से हम लोगों ने सर्कल बनाना चालू किया था उसके सेंटर से हम सेंटर मैच करेंगे. नाउ इफ यू सी लाइक दिस ओवर हियर, एग्जैक्टली सेंटर पे हम लोगों ने मैच किया है. फिर उसके बाद पहला है 150 डिग्रीज, सो ओवर हियर इज 0. आई विल स्टार्ट लाइक दिस. 150 डिग्रीज मेरा यहाँ पे आ रहा है, लाइक दिस. आई विल स्टार्ट 150 डिग्रीज ओवर हियर, एक डॉट लगा के like this. I'll make a line till my center and then like this, जहाँ से हमने चालू किया. Then the next is deposits 100 degrees. Now students, जहाँ मैंने end किया था वहाँ पर ही हम लोग start करेंगे. Yes, center to center match. जहाँ end किया वहाँ से हम start करेंगे. So yes, over here it is 0. फिर उसके बाद मेरा 100 आ रहा है. इफ आई स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड, सो यस 0, 10, 20, 30, 40 ऊपर वाला देख रही हूँ मैं. सो 100 इज ओवर हियर अगेन लाइक दिस. सेंटर टू सेंटर से लेके यहाँ पे एक लाइन आएगा. दैट विल बी ऑफ डिपॉजिट्स. देन इज 50 डिग्रीज फॉर लोन. सेम थिंग स्टूडेंट्स ओवर हियर. Again center to center I'll match. yes, center to center हम match करेंगे. उसके बाद हमारा next है 50 degrees. so 50 degrees 10, 20, 30, 40, 50 यहाँ पे same thing हम लोग यहाँ पे ये वाला डॉट से लेके हम यहाँ से ऐसे बनाएंगे. लास्ट 60 degrees. सो बचा हुआ 60 डिग्रीज होना चाहिए. अगर नहीं आ रहा है इट मीन्स यस देयर इज सम मिस्टेक. नाउ यस अगेन सेंटर टू सेंटर. फिर उसके बाद यस यहाँ से स्टार्ट करेंगे एग्जैक्ट 60 डिग्रीज स्टूडेंट्स. यस इफ यू सी इट इज एग्जैक्टली 60 डिग्रीज. अगेन एक लाइन हम यहाँ पे ऐसे बना देंगे. Now after doing this students, we need to give different designs to each and every particular. Suppose for share capital I go for small circles. So share capital I'll make a box like this and small circles हमको इधर दिखाने हैं. Next is deposits. Deposits के लिए suppose मैंने lines बनाई है तो deposits बाजू में लिखे lines. फिर उसके बाद लोन, तो लोन के लिए डॉट्स हैं तो अगेन एक बॉक्स बना के हमको इधर डॉट्स रखने. देन लास्ट वन जो है वो मैंने ब्लैंक छोड़ा है तो यहाँ पे भी ब्लैंक आएगा. आई होप आई एम क्लियर टू यू स्टूडेंट्स. हमारा नेक्स्ट जो है दैट इज obviously the same one जो हम लोगों ने अभी स्टडी किया, पाई डायग्राम. Now over here you are given the information regarding the annual expenses of 2 different families. अब यहाँ पे 2 different families के बारे में हमको बताया गया है. So obviously we will be drawing the 2 different circles. We shall draw 2 circles for 2 families with radii proportional to the square root of the total expenditure of 2 families. By taking total expenditure as 360 degrees, the measure of angles of subdata are obtained in terms of degrees. Now over here, radius of family, हम radius का calculation करेंगे. Very first, the total. The total is what? Yes, 90,000. 90,000 का square root is 300. Divide करेंगे हम 100 से, उसको छोटा करने के लिए. So 300 divided by 100, I'll get 3. Next is what? 1,60,000. So family B का same way से हम calculation करेंगे. I'll get 4 centimeters. It means यहाँ पे टोटल कम था तो हमारा सर्कल छोटा बनेगा. यहाँ पे जो फैमिली बी है टोटल ज़्यादा था तो सर्कल यहाँ पे बड़ा बनेगा. So it is 3 centimeters and 4 centimeters. Rest you all know how to do. Yes, कैलकुलेशन करेंगे, डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे, फिर सर्कल ड्रॉ करेंगे. Over here it is 3 centimeters and 4 centimeters already given to you. People already decided as per the calculations.
एंड देन द डिविजन्स, यस, जो फूड का सिंबल ए में वही बी में, और सेम आपको बाहर भी बताना होगा। सेम जैसा सिंबल एक फैमिली में लिया है वैसा ही दूसरे में लेना है पर्टिकुलर्स का, एंड वो बाहर भी आप लोगों को दिखाना होगा। यस, द हेडिंग इज अगेन इम्पॉर्टेंट ओवर हियर। Now students, next I move on to pictogram. Now as I have already explained you, over here there is no language barrier. It is explained with the help of appropriate pictures. A diagram in which the data are represented by appropriate pictures is called pictogram. The pictures are selected with reference to the data. For example, if the data related to population are given, then it is shown by the symbols of human. The picture are drawn in proportion to the amount of given data. Pictograms draws quick attention of the viewer. If the data are presented by pictograms, then it can be easily understood by less educated people and by the children. Yes, ये हम लोगों ने already advantages में study किया था. Over here, yes, ये attention grabber होते हैं, बहुत जल्दी लोगों का इस पे ध्यान जाता है. Also there is no language barrier. Again ये भी मैंने पहले बता दिया था आपको. The main disadvantage of this method is that it has limited usage in statistical analysis of data. हर जगह पे इसका यूज होना पॉसिबल नहीं होता है. Now students, yes, on the screen you will find the example of it. The information regarding the population of 5 cities is given to you people. City A, B, C, D, E. Population is also given to you people. Here one figure of human, फिर उसका पिक्चर बनाया गया इक्वल्स टू 20,000. ये सी कैलकुलेशन आप लोगों को दिखाना कंपल्सरी है. दिस इज पार्ट ऑफ द कैलकुलेशंस. नाउ ए, सिटी ए जो है आपका ओवर है, सिटी ए 20,000 है तो ए की बनाना है. देन इट इज सिटी B 40,000, so obviously 2 बनेंगे. C 60,003, so on. लास्ट में जो E है that is 90,000. 90,000 we will drawing. ये 20,000 हुआ, ये 20,040, ये हुआ 60, ये हुआ 80. so लास्ट वन यहाँ पे हाफ ड्रॉ किया हुआ है. Now students, सेम में ही पिक्टोग्राम में ही अगर आप लोगों को 3 डिफरेंट आइटम्स के बारे में बताया गया हो. So the data regarding the area and the cultivation of various crops at farms of 2 villages are given, presented through pictogram. Crops दिए हुए हैं 3, area under cultivation फैक्टर में बताया गया है विलेज A and B. Over here also यहाँ पे एक ही डायग्राम बना था, एक ही पिक्चर बना था. यहाँ पे because there are 3 different crops, so obviously the pictures will also be 3 different. Yes, rest you all know. Over here the calculations are given to you. One figure of crop equals to 100 acres of area under cultivation. Accordingly यहाँ पे draw किया हुआ है. I'll explain you the first one. Cotton 400, 100, 1 is equivalent to 100, तो 4 बनाए गए हैं. 500 इधर दिया हुआ है तो 500 इधर विलेज बी में कॉटन क्रॉप का बनाया गया है. Students, I hope I am clear to you with all my topics. So students, I'm done with my today's e-class. Yes, thank you students.